Hello friends, my name is Rohin and today we are going to learn parts of speech. Part of speech हमारे ग्रामर का बहुत important कंटेंट है. ओके, सो पार्ट्स ऑफ स्पीच में आता है एडजेक्टिव्स, कंजंक्शंस, एडवर्ब्स, इंटरजेक्शंस, नाउन्स, प्रीपोजिशंस, प्रोनाउंस एंड वर्ब्स. हम ये सब चीज़ों को स्टडी करेंगे. ओके, एंड वो भी पूरे डिटेल में. सो कमिंग टू आवर फर्स्ट टॉपिक, नाउन. नाउन क्या होता है? इन हिंदी वी कॉल इट संज्ञा. ओके, तो नाउन इज अ वर्ड यूज्ड टू आइडेंटिफाई एनी ऑफ अ क्लास ऑफ पीपल, प्लेसेस और थिंग्स. ये एक ऐसा वर्ड होता है जो आइडेंटिफाई करता है एनी ऑफ अ क्लासेस ऑफ पीपल, प्लेस और थिंग्स. A noun is a part of speech that names a person, place, things, idea, action or quality. जो नाउन एक ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच है जो नेम करता है किसी इंसान को, कोई जगह को, कोई चीज को, कोई आइडिया को, कोई एक्शन को या कोई क्वालिटी को. ओके, प्रॉपर नाउन रिफर्स टू द इंडिविजुअल नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग्स. एग्जाम्पल्स ऑफ नाउन जैसे कि मैन, वुमेन, टीचर, जॉन और मैरी. ओके, या दिस आर द सम एग्जाम्पल्स ऑफ नाउन. नाउ टाइप्स ऑफ नाउन. देयर आर 10 टाइप्स ऑफ नाउन. दैट इज कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कॉन्क्रीट नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, कंपाउंड नाउन, कलेक्टिव नाउन, सिंगुलर नाउन एंड प्लूरल नाउन. टाइप्स ऑफ नाउन में सबसे पहला आता है कॉमन नाउन, जो कि एक नॉन स्पेसिफिक पीपल को होता है, कोई नॉन स्पेसिफिक प्लेस को, कोई चीज को और कोई आइडियाज को. एग्जाम्पल्स जैसे मैन, सिटी, रिलीजन एक्सेट्रा. प्रॉपर नाउन क्या होता है? ये स्पेसिफाई किसको करता है? ये एक स्पेसिफाई करता है पीपल्स को, स्पेसिफिक पीपल्स को, स्पेसिफिक प्लेसेस को और स्पेसिफिक थिंग्स को. फॉर एग्जाम्पल एल्बर्ट आइंस्टाइन, लंदन एक्सेट्रा. एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? इट इज समथिंग दैट यू कैन नॉट परसीव विद योर 5 सेंस. ये कुछ ऐसी चीज होती है जो हम अपने 5 सेंस से परसीव नहीं कर सकते. एग्जाम्पल जैसे कि बिलीफ, भरोसा करना, लव, प्राइड, हैप्पीनेस एक्सेट्रा. कॉन्क्रीट नाउन. इट इज समथिंग दैट यू कैन परसीव विथ योर 5 सेंसेस, जिसे हम परसीव कर सकते हैं हमारे 5 सेंस से. फॉर एग्जाम्पल एप्पल, लायन, आइसिस, फ्लावर एक्सेट्रा. Countable noun. Countable noun is a noun which can be counted. Okay? For example, पेंसिल है, पेंसिल्स है, कितनी है. एप्पल है, एप्पल्स है, कितने हैं. ट्रेन है, क्लॉक है एक्सेट्रा. Uncountable noun. Uncountable noun is a noun which cannot be counted. For example, milk, music, food, water, snow, rice etc. Compound noun. Compound noun is made up of 2 or more smaller words. For example, textbook, snowball, seafood, sunflower. Okay, it is all a part of compound noun. These are the examples of compound noun. Collective noun. It is refers to a group of things as one whole. For example, bunch of flower, audience, flock, group, family, etc. Singular noun. Singular noun, it refers to one person. It refers to one place. It refers to one thing or one idea. For example, cat, dog, sheep, monkey, hero, etc. Plural noun.
Plural noun is opposite of singular noun. Okay, it refers to more than one person, one place, one thing, or one idea. For example, dogs, cats, sheep, babies, etc. Now, what are number? That is singular and plural. Number is divided into two parts. पहला होता है singular, दूसरा होता है plural. Singular denotes a single unit. For example, one chair, one book, one man, etc. Plural denotes more than one. Objects, ideas, persons, or situations. For example, chairs, books, men, etc. Now this is the regular noun, which is also known as singular noun, and this is the plural noun, that is box, boxes, tomato, tomatoes, candy, candies, book, books. Okay, now kind of nouns, and this is the exercise. Okay, now the first one is the book was lying on the table. Now we have to find out whether the book is a common noun, is a proper noun, or is a collective noun. Okay, book was lying on the table. Here the word book, it is a common noun, and the table, it is also common noun. Second one, love begets love. Here love is a common noun, collective noun, or is an abstract noun. So my answer will be love begets love. Here love is an abstract noun. We cannot live without water. Water is a common noun. Whether it is a common noun, it's a material noun, or it's an abstract noun. The answer will be we cannot live without water, and the water will be material noun. The jury has given its verdict. Whether the jury is a collective noun, is a common noun, or is an abstract noun. The answer will be the jury is a collective noun and the verdict is an abstract noun. The Hindus regard Krishna as an incarnation of Lord Vishnu. The options are Hindus is a common noun, is a proper noun, or is an abstract noun. The answer will be the Hindu is a proper noun, the Krishna is also a proper noun, incarnation is a common noun, and Vishnu is a proper noun. Alcohol is injurious to health. Health options, health is a common noun, is an abstract noun, or a proper noun. The answer will be alcohol is a material noun and the health is an abstract noun. Smoking is a bad habit. Whether the habit is a common noun, proper noun, or an abstract noun, my answer will be habit is an abstract noun. Wild animals live in forests. Whether the animals is a common noun, proper noun, or an abstract noun, wild animal lives in forest. Here the answer will be animal is a common noun and forest is also a common noun. The childhood of Peter was full of misery. Childhood, whether the childhood is a common noun, is an abstract noun, or a proper noun, the answer will be the childhood is an abstract noun, Peter is a proper noun, and misery is an abstract noun. All the girls were singing. Girls is a whether the girls are is a common noun, the girls is a proper noun, or is an abstract noun, the answer will be the girl is a common noun. Rice is the staple food of South Indians. Rice is a common noun, is a material noun, or is an abstract noun. The answer will be rice is a material noun,
The food is a common noun and the Indians is a proper noun. The earth moves around the sun. Whether the earth is a common noun, is an abstract noun or is a proper noun. The earth moves around the sun. The earth is a common noun and the sun is a common noun. Thank you.